Seminyo District Green Initiative pra Phase 1 Roadside Beautification Plantation Drive to 23rd May 2025 Deputy Commissioners Complex de loise. Team to Let's Green Our Road, Let's Beautify Our Future bitor de loise. Znepodo District Tizu Valley Biodiversity Conservation and Livelihood Network pra 1,763 hectares jungle preserve kurigina rakhi ase. Itu do hoile government laga modot noloigina kuri ase koigina Evan Jimomi pra janaise. Manipur de 48 Gonta state-wide band matikina 2 din de kusishe aro 5ta district laga normal life ke effect kurishe. Idu bando Kokomi pra organize kurishe government baste state laga nam hatai dia pra. Prime Minister Narendra Modi pra New Delhi Day May 23 Day Rising Northeast Investors Summit ke inaugurate kurishe. Key sectors to tourism and hospitality, agro-food processing, textiles, handlooms, handicrafts aro infrastructure khan ase. Satta multi-party delegation ke Shiv Sena MP Shrikant Shinde aro JDU MP Sanjay Jha lead kurikina UAE aro Japan ponjishe Thursday din. UAE aro Japan rabi Indian delegation ke iki logode khara ase koikna chanaishe. Good evening viewers. Apni khan saiga se breaking news at 2 p.m. Muim Nisan Limchen. Itia details honi lobo. Seminyo District Green Initiative pra Phase 1 Roadside Beautification Plantation Drive 23rd May 2025 Deputy Commissioners Complex de thakishe. Aro team to Let's Green Our Roads, Let's Beautify Our Future de loise. District de green tourism aro environmental restoration thakibo karone itu event rakishe. Plantation campaign to 10th June tak thakibo koikna janaise. Idu phase te 25,000 saplings aro cherry bauhinisia nishna indigenous species te focus koribo kushe. Kikam sangla Chamir ADC Seminyo convener TDGI Taipra collaborative efforts te khushi pa chanai dishe. Aro khushi ki Seminyo to Nagaland te ekta environmental stewardship model hobo kushe. Plantation period te awareness campaigns thakibo aro activities thakakan sob document kurigina district coordination committee ke report kuribi kushe. TDGI pra bosti aro town de thakakan ke sob hessa loigina participate kuribolai janai dishe. Znepodo District te Tizu Valley Biodiversity Conservation and Livelihood Network junto ekta community-led initiative ase. Idu pra 1,763 hectares jungle preserve kurigina rakhi ase. Tinta bosti Shukai, Bukuye aro Kiviku bosti de. Idu to hoile government laga modot noloigina kuri ase. TVBCLN to Sal 2014 de shuru kushe. Junto laga maksad to biodiversity raksha kuribole. Traditional practices zinda rakhibole aro sustainable livelihood promote kuribo nimite thakishe. Ivan Jimomi pra led kurigena TVBCLN pra rare species bachaigena rakhi ase. Ecotourism promote kure aro Chengu festival host kurigena conservation awareness phelai ase. Idu network pra alak challenges khan samna kuri ase. Purana traditions shikar kura aro land ownership issues ke milaigena. Kintu taikhan pra education, training, awareness aro community engagement pra issues laga hal anibole pura koshish kuri ase. Idu eklan nohoi kena TVBCLN to ekta nutun Red Plus carbon finance project te bi kaam kuri ase 43 bosti de. Juntu pra revenue generate kuri kena reforestation aro livelihood te reinvest kuri wale kaam kuri ase. Idu project to hoile dairy aro dusra international organizations logode milikena kaam kuri ase. Kote national aro international recognition bhi paikena ase. Jimomi pra ekta khas khoda khushi ki naga manu laga culture aro biodiversity pra future banabole paribo aro bosti laga bahar na jaigena bhi kuribole paribo khushi.
Association of Power Engineers Nagaland General Conference Koimade May 21 din lua humoi Power Minister KG Kenya bra billing practices te reforms electricity charges te minimum rates botli ki chulai thakibole mangibole oporde khoda khoshe tai khoshe ki billing accountability na thaka bra smart prepaid meter implement kuribole diktar hui ase Kenya pra Central Sarkar laga rooftop solar PMSG MBY scheme aro local generation projects ke adopt kuribole chanaise aro engineers ke itu initiative ke prioritize kuribi aro cooperate kuribi kushe APEN President Engineer Kasho Chishipra Engineering Ethics Technological Innovations te updated thakibole aro cadre reviews kurikena workforce effective banabole khoda phatishe Power Secretary Asangla Intipra engineers laga professionalism aro smart technologies adopt kuribi koina encourage kurise Notun executive team 2025 to 28 chunishe khote engineer Mohandu Mokhikon ke president banaise Tobu headquarters te intoxicating substance ke hatai dibole chuli thaka campaign te konyak Newpu Sheko Kong pra 16 cartons bia kuri dishe aro Indian made foreign liquor ram ke seize kurise enforcement operation de Idu bhanga bhangi do Tobu Town Students Union aro kishim civil society organizations leaders samne de kurise Inaga kadam kura pra healthy aro substance free mahol banabole community commitment dekhaise India's international movement to United Nations laga tin conference to Kohima G Rio School de pra shuru huise Event to Minister KG Kenya aro Ambassador Jitendra Nath Mishra pra chief guest wignan huise Deputy Commissioner Hanbok Buchemdo guest of honor thakise event to candle lighting ceremony loigna shuru huise Minister Kenya pra IIMUN role ke unity aro peace promote kuran nimite tarif kurise aro DC Puchem pra combat misinformation de critical thinking thakibola nimite emphasize kurise Aimundo youth led organization ekta ase juntu 35 desh te 220 shehar students conference khan ke host kure aro 10 million upper students khan ke globally impact kure kushe ido upor reporter Grace laga detail report saiso When you speak to an audience like yours like you I see that there are parents sitting in the first 3 or 4 or 5 rows and behind them are students and I'd like to congratulate you on your magnificent clothes, indigenous from the region, your identity, very proudly your identities and this is not something I see everywhere in India, honestly and this is something I admire about Nagaland. This is my 4th visit to Nagaland, the 3rd visit to Kohima, I went to Lumami. So I know a little bit about Nagaland. And I'm looking forward to that music out there, your fantastic bands and music. But what do I tell to a bunch of parents and students? I not prepared a speech, I don't prepare speeches. I like to speak for the moment and in the moment. You know, we had the meeting, the Global Principal Forum this afternoon, and I think, Srinidhi, you mentioned curiosity. Do you know the Mars rover of the Americans, that is called Curiosity? To curiosity, I would add imagination. I was telling the story about the Pushpak Viman on which Ravana, after abducting Sita in the Ramayana, flies towards Lanka. Pushpak Viman, a chariot, a flying chariot. Well, were there flying chariots those days? Most unlikely, I think.
if you go by science. So if there weren't flying chariots, why is Valmiki writing about flying chariots? That's because you have to imagine something that can fly before you create something that can actually fly, which is an aeroplane. So you have to imagine. You have to imagine being on the moon before you can actually get there. So imagination of something is very important as curiosity. My dear students and especially dear parents, we talked about two things today. What do you do after hours? What do children do after hours? They are not allowed to use cell phones in the school, but they are allowed to use cell phones after hours. It is the responsibility of the parents to regulate the use of cell phones after hours, because when you are denied something, if I haven't had a rasgulla for like 3 years and I see a bunch of them, I'm going to attack and eat 10 at the same time because I'm desperate to eat rasgullas. So if you're denied something, you're desperate to do it. You have to reach a balance. Not too much or too little. Why I'm saying this is paper, paper and paper. Knowledge is power, knowledge is power, knowledge is power. To that I will add, knowledge is paper, knowledge is paper, knowledge is paper. The clap of hands perhaps indicates that you perfectly understood what I was trying to say. Knowledge is not the cell phone. Knowledge is not the computer. Knowledge comes from the mind, from creation and imagination. And knowledge comes from reading and imagining and perceiving. Knowledge comes from reading literature and philosophy and history. Without history, we are nothing. We are the children of our inherited histories. If we don't know our history, we don't know who we are, where we came from, and what we are about. Don't read on Kindle. Don't read on the computer. And certainly don't play games with yourself and with your friends on WhatsApp and social media. Social media is becoming a compulsive distraction in this troubled time. Please be very careful. And parents, you have as much of a responsibility to regulate, if not eliminate. You can't eliminate something that is so freely accessible to all of us. So I was talking about reading. We talked about curriculum. Srinidhi mentioned 200,000. Our school has been well associated with IMUN. We have hosted IMUN conferences a number of times in the past years, and it is a great pleasure to host this very special edition of IMUN state level conference once again at our school. I also take this opportunity to congratulate IMUN team on their successful journey of 14 years and wish you many, many more. IMUN is an organization run by the youth with huge network and provide the youth with a platform to voice their opinions. The role of youth, which comprises of more than 50% of our country's population, is of most importance in today's time. Young people now and in the future will play a big role in how our world adapts to all the challenges that we face today. They have the ability to learn and adapt and to bring social reform and improvement in the society. With youth comes energy, innovation, and optimism. These lay the grounds for major positive contributions by our youth. IMUN organizes conferences all over the country and the world at large on very relevant issues, which gives opportunity to young participants to learn about their nation and other nations
to have debate and group discussions and to come up with some resolution. I would like to encourage all the delegates, the young participants, to make the best use of this IMAN program. Be well prepared for your topics of discussion. Do not hesitate to raise your opinions. At the same time, do listen to others' opinions too. Learn and take as much as you can with you out of these 2 days program. I wish all the participants the very best and hope you will have a very enjoyable and a very good learning experience during the next 2 days of your conference. And once again, thank all of you. Have a good evening. That was such a cute speech. So next, I would like to call upon stage Mrs. Trelio Moore is the Managing Director of Cheerio School and has been a dedicated educator for over 30 years. Under her leadership, Viewers, itia break khata bra loi lobo. Welcome back. Apnyan say breaking news. Itia next cover janai dibo. Mungokchong Best Theatre Group Associates for Performing Arts and Theatricals pra May 25 day Ongza ki de pra towards a transformative art laga team under day pra 25th Silver Jubilee manawale ase. It is all Sal 2000 day Fraternity and Progress through virtuosity laga motto digena bana laga ase aro APAT do 2 decades nishna Nagaland de artistic talent aro theatrical expression promote korise Nehru Yuva Kendra logo de pra officially attached hwa laga ase aro Nagaland Registration of Society Act bhitor de register korise group to creativity foster kura laga ase aro social awareness raise kuribo aro marginalized communities ke through drama aro performance arts they support kurigina aim kuribole ase May 21 din de Deputy Commissioner Mon when he Konyak pra visit kurigena ekta coordination meeting ADC conference hall de Kaunburas civil societies representatives aro government officials khan logore loise itu meeting de administrative ke bal pra coordinate kuria local problem khan ke address kura aro government aro community miligena kam kura aro region ke bal governance hobo nimide loa jani paise Major General Professor Atul Kotwal, SM, VSM, Executive Director of Nagaland Health System Resource Center, pra Nagaland Department of Health and Family Welfare laga officials kan logore review meeting loise. Discussion do state health initiatives laga implementation aro progress assess kura laga focus kure kushe. The visit pra healthcare delivery systems se collaborative efforts enhance kura laga reflect kuribo aro Nagaland de central healthcare schemes ke effective execution ensure kuribo. For Assam Rifles laga Assistant Commandant Ishantang Kikon ke duty de tai laga bhal kam aro dedication nimite Shaurya Chakra Award dishe.
Nagaland Minister Jacob Jumomipra kikonke badai digna social media de share kurishe aro nation bidor kikon laga selfless service oporde kushi chanaikna tai laga nam unjar kurishe idu logode idu award pra kikon laga gallantry contributions ke highlight kurigina Nagaland Nltv bishi kushi laga khota ekta ase koikna chanai ase Prime Minister Narendra Modi pra New Delhi te pra May 23 de Rising Northeast Investors Summit ke inaugurate kurishe kote region te investment ke boost kuribole aim kurishe key sector to tourism and hospitality agro food processing textile handlooms handicrafts aro infrastructure khan shamil ase idu eklan hoigna Mukesh Ambani pra bi North East te ₹75,000 crore investment pledge kurishe साथियों विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर एक्ट स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है यही पॉलिसी यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को हमारे नॉर्थ ईस्ट को Manipur de 48 घंटा स्टेट वाइड बंद मतिकिना 2 दिन दे गुसिशे आरो 5टा डिस्ट्रिक्ट्स लगा नॉर्मल लाइफ के इफेक्ट कुरिशे कुनबा माकी बंद सपोर्टर्स प्रा बिष्णुपुर आरो थोबाल डिस्ट्रिक्ट्स जका खंदे सिक्योरिटी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस लगा गाड़ी खान गे रुखाइकिना Manipur/Kanglek Park कोइगिना विंडशील्ड्स ते चिपकाई दिशे Kanglek Park तो मणिपुर लगा पुराना नाम आसे Friday Puchur, Rasta Konade, Sebji Bika Manukan, Stall Kulishe, Andro Parking, Konba, Aro, Kurai areas laga, Imphal East District. Kintu, Band supporters pra stalls ke bon kurivole kushe. Sub business establishments, educational institutions, government, Aro private offices bon, Aro public transport be Rasta de Beranai. Khali medical emergencies aro kun khan Ukrul district te Shiroi Lili festival de hissa lobole chaise tai khan ke hi rasta de berabole dishe idu bando mitai organizations coordinating committee on Manipur integrity kokomi pra organize kurishe kele mane government bas te state laga naam hatai dia bra ase Assam Police pra duita major anti-narcotics operation jaikena drug kimat rupees 7.5 crore por seize kurishe aro charta suspected drug peddlers ke girftar kurishe Karbi Anglong de do police pra gari te bisarigena 2.977 kg morphine recover kurishe juntu laga kimat rupees 1.5 crore hobo koigna estimate kuri ase idu case te connection thaga laga duita manu ke arrest kurishe alak operation ekta pra Shri Bhumi police pra alak gari bisari gena 1.23 kg heroin kimat rupees 6 crore dhurigina duita manu ke custody de loi jaise officials pra further investigation lo jai ase koina confirm kurise घाटग्राम वहाँ इंटरसेप्ट किया तो एक ट्रक पहले आया इस ट्रक को पीछे से एक ट्रक ने और सहायता करके आ रहा था बाद में हम लोग को ये दोनों ट्रक को चेक किया है इंटरसेप्ट करने के बाद चेक करने का बाद मिला है एक ट्रक में मिला है तो खाली ट्रक था तो बैक साइड में ट्रिपल था ट्रिपल का अंदर छिपा के लेके आया था तो 110 सॉफ्ट केस मिला है इसमें क्या थे ये प्रोडक्ट क्या थे हीरोइन था हाँ हीरोइन था कितना सामान कितना कम मिला था और ये 110 सॉफ्ट केस मिला है जिसका मतलब होगा 6 crore
Assam Rifles Khan pra May 22 day read laying ceremony loise. Duida Brave Hearts Rifleman D Kokul Singh SMP aro Rifleman Avdar Chakma PMG PK honor kuribole. Kun Khan pra duty de thaka homoy cheven gabaishe. Kohima de Unit War Memorial Tebi Rifleman D Kokul Singh ke tribute dishe. Jun pra nijor laga jivan sacrifice kurishe. Insurgents Khan nogode May 22 de encounter kura homoy. Idu nishna none Manipur debi Rifleman Avdar Chakma nimide remembrance ceremony loise. Aro alak event ekta loise Lower Maduka Nala Diyun Changlang district te. Kote local communities, veterans aro active personnel khan ikilogode ahikina taike commemorate kurishe. Idu event de desh laga heroes aro tai khan laga sacrifices khan ge honor kurina respect aro unity dikhaishe. Ceremonies to May 23 de khotam hobo. Assam laga Golagat district te Thursday din ekta Royal Bengal Tiger ke mop pra morai digna tai laga gao laga hissa ke bi loi jaise kushe. Hatsa do Dumukia bosti de hoise. Bosti manu khan pra adult mota tiger ke morai digna claim kushe ki idu tiger do manu ke khai aro kunuba khan ke hamla kurise kushe. Reports hisab Bosti manu khan pra local hatiyar jinaga dao lathi aro luhagan chulaigina tiger ke hamla kurise. Forest Department personnel kun bosti de ponjishe Januar ke bacha bole holibi rasta de rukha bole para nai. Local villagers kan pra allege kurishe ki tiger do bosti de ek moina nishna berai thakishe. Bishish jun pra Forest Department ke blame kurishe tranquilize kuri bole aro Januar ke capture kuri bole na para pra. Forest official hisab ekta case darj huise idu hatsa laga mamla de. हम तो पहले जिंदा देख रहा हम टाइगर को हम हमारा कर्तव्य है ना हम उसको बचाने के लिए हम गया था हम लोग का ये ड्यूटी है हम इसीलिए गया था ड्यूटी करने के लिए लेकिन हम वो पब्लिक को हमको क्या कर रहा किया ऐसे बोल रहा बोल के हमको फायरिंग मत करो हाँ ऐसे ऐसे बोला मैं क्यों हमारा टाइगर हम लेने के आया हम लेके जाएगा हम काजीरंगा में ये बोला लेकिन वो पब्लिक तो हमको माया ना आदमी तो बहुत था हजार 2000 में हो गया दो तीन और बात का जो बाकी शरीर का जो आंग भी काट के ले गया लेकिन हम तो ये रखने नहीं पाया ये हम लोग 8:30 बजे मिला है इन्फॉर्मेशन उसी टाइम हम हमारा स्टाफ भेज दिया कुमटाई सर्कल का अंडर क्या है दखोटी मुँह में आ गया उसको आदमी भी गया आदमी को हम लोग कोशिश कर रहा था वो भी पूरा हम मुंह आके उसको मार दिया इसके बाद हम वो भी जो रूल का भी हिसाब से पोस्टमार्टम कर रहा हूँ वो भी रजिस्टर्ड भी करा है और बाकी जितना रूल हिसाब से कर रहा हूँ हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है Agartala de May 22 din Bangladesh National Panjun Kunkhan sob ekta family brase Tripura Sepahijala district e police pra Thursday de girftar kurishe 5 Jun do India de illegally gushibo karone girftar kura laga ase aro tai khan India de ahibole karone iku valid documents khan nathaki kina Madhupur police station officer in charge Debojit Chatterjee pra idu khobor janaishe Sikkim laga penkak silat coach to Bishwas rakhi ase ki state to ikus support e excel kuribole potential ase koikna khile koile tai laga ekta student pra Khelo India Games beach games te medal jidishe beam do karate coach Bishwas hisab te shuruat kurishe holibi pancake silat te gusi jaigna itia do tai duisa laga experience duri ase Sikkim laga Yamuna Chetri do pancake silate bronze medal jidishe idu sport to iman jana mana nohoi idu karone tai akhar rakhi ase ki tai laga achievement pra state te idu sport upore awareness anibo बहुत ही खुश लग रहा है ये मेडल सिर्फ मेरे लिए नहीं है ये मेडल हमारी
मेरा मेरा स्टेट के लिए सिक्किम, एंड आई एम रियली हैप्पी ऑल्सो एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ टू। ये तो नए नए स्पोर्ट्स है पेंचक सिलेट जो हमारे सिक्किम में नए हैं, और मेरे मेडल से थोड़ा शायद अब थोड़ा आएगा, शायद खेलने के लिए आएगा और लोग आएगा, और इससे आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं। आप कैसे इस स्पोर्ट में आए? इसमें सेल्फ डिफेंस भी काम करता है ना, जी, लोगों के लिए भी बहुत मदद करता है जी। इसकी वजह से आप आए हो कि क्या है? बताइए आपका। मेरा जर्नी तो वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले कुछ दूसरे स्पोर्ट्स खेलती थी, कराटे। आई यूज्ड टू प्ले कराटे। देन फिर मैंने पेंचक से ज्वाइन किया क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड है, एंड देन इसमें 5 इवेंट्स है टोटल, एंड 5 इवेंट्स में डिफरेंट टाइप का होता है, लाइक सोलो, तुंगल, गांडा, रेगू और टेंडिंग। और ये बहुत ही यूज़फुल डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह होता है क्योंकि ये वेपन और फ्री हैंड्स भी होते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल है। तो इसलिए मैंने पेंचक सिलेट ज्वाइन किया, और अभी तो अच्छा ही चल रहा है पेंचक सिलेट में हमारा। इतने दूर से आए हो, सिक्किम कहाँ पे है, ये कहाँ पे? दो दिन तो लग गया होगा पहुँचने में। जी। तो ये जर्नी के स्ट्रगल की वजह से और भी खुश होकर अच्छा लगता होगा आपको, सेटिस्फेक्शन और भी मिलता होगा? हाँ, सेटिस्फेक्शन तो ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग कल को ही आया था, एंड कल ही मेरा डेमोन्स्ट्रेशन था, और थोड़ा थकी हुई भी थी, फिर भी हमने किया, अपना बेस्ट दिया, एंड अच्छा भी गया। कल कितने बजे पहुंची हो आप? कल 9:30। 9:30। उसके बाद डेमो हुआ कितने बजे? डेमो 6:30 सॉरी 8 रात को, मतलब रात को। मैच कितने बजे हुआ? मैच हुई 8 आज हुआ मैच? 8 बजे? जी। नहीं, डेमो भी 8 बजे हुआ ना? फाइट दूसरा का है, मेरा सिर्फ डेमो है। अच्छा, लेकिन मेडल वाला मैच कब हुआ फिर? मेडल वाला मैच कल के हुआ था, हाँ। और वो डेमोन्स्ट्रेशन में है सोलो, एंड आई सिक्योर्ड 3rd पोजीशन। আজিকালি हुआ पाकिस्तानी शेलिंग ते एफेक्ट हुआ फैमिली खान के विजिट करिबले राहुल गांधी प्रा पुंछ विजिट करिसे। इदुदो हइले इंडिया प्रा पाकिस्तान और POK टेरर हाब्सते ऑपरेशन सिंदूर प्रा स्ट्राइक करा पिछे आसे। शेलिंग ते प्रा 27 मानु जखम करिसे और 70 निशना जखम करिसे। इदो विजिट तो जम्मू एंड कश्मीर ते पहलगाम टेरर अटैक हुइना गांधी लगा सेकेंड विजिट आसे। राहुल गांधी प्रा थर्सडे डे इकु नकवाइकिना दिल्ली यूनिवर्सिटी विजिट करिसे। कते यूनिवर्सिटी अथॉरिटी खान प्रा स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करिसे। यूनिवर्सिटी लगा प्रोफेसर रजनी अब्बे प्रा स्टेटमेंट प्रा जनाइसे कि गांधी प्रा अथॉरिटी खान के इकु नकवाइकिना सेकेंड टाइम विजिट करि आसे। ताई लगा लॉन्ग आवर स्टे दे सिक्योरिटी प्रा DUSU ऑफिस तो रिस्ट्रिक्ट करि दिसे कसे। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रा NSUI मेंबर्स खान प्रा स्टूडेंट खान के मिस्ट्रीट करिसे कोइना भी एलेज करिसे, आरो DUSU सेक्रेटरी के ताइलागा ऑफिस ते प्रा ब्लॉक करि दिसे कसे। यूनिवर्सिटी प्रा इदु इंसिडेंट के कंडेम करिसे आरो स्ट्रिक्ट एक्शन वार्न करिसे। पहलगाम दे टूरिज्म दो रुखी जायगना से अप्रैल 22 दे 26 टूरिस्ट खान के टेररिस्ट प्रा मुराई दिया पिछे। पुला बिशे क्राउडेड स्पॉट्स बेताप वैली आरो बोबी हाट खान इतिया मनो नाथाकी किना खाली हुई जायगना आसे। होटल ऑक्युपेंसी खान भी 10% दे ड्रॉप हो जाइसे, आरो कुनुबा डांगर होटल्स दे गेस्ट एकता भी आहानाय। इदुनि मिदे स्टाफ खान के बोर्डे फटाई दिसे, आरो लोकल कुन खान टूरिज्म दे डिपेंडेंट आसे ताइखान बिशी दुख पाई आसे। ये दुर्घटना है, बहुत बुरा हुआ, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो यहाँ के लोकल हैं उन लोगों को बहुत इफ़ेक्ट पड़ गया इसका, बहुत हद से ज़्यादा। आप देखिए मार्केट पूरा खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है।
लोकल भी नहीं है यहाँ पे। जो असर पड़ा है सबसे ज़्यादा पहलगाम को पड़ा है, लोकल को पड़ा। आप देखें मार्केट पूरा खाली है, यहाँ पे कुछ है नहीं। गवर्नमेंट को इनको सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ के जो लोकल हैं जिनकी एक हिसाब से कमर टूटी है इस हादसे की वजह से। अभी कोई नहीं छोड़ा गया, सब अभी क्लोज पड़े हुए हैं, सब बंद पड़े हुए हैं। अगर यही साइड सीन के जो हैं यही खोल जाए तो तब भी अभी लोकल भी नहीं आते हैं। लोकल भी तब भी आएंगे जब साइड सीन खुला होगा। तो अभी गवर्नमेंट को इतना चाहिए कि साइड सीन खोल दे, कोई लोकल आएगा, कोई मतलब आगे पीछे जाएगा तो सिर्फ पहलगाम यही मार्केट देखने थोड़ा आएगा। जो यहाँ पर ये वाक़ा हुआ इससे हमको भी बहुत दुख हुआ है। अब यहाँ पर इससे बहुत इफेक्ट पड़ गया है, अभी कुछ काम है नहीं, सब उससे ज़्यादा इफेक्ट अब यहाँ कश्मीरी को ही पड़ गया है, खासकर टूरिस्ट प्लेसों पे। गवर्नमेंट को भी अब हमारा भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर अब थोड़ा सा रेस्टोर करे ताकि हमारी ज़िंदगी भी थोड़ी चल सके। मुझे लग रहा है ये साइड सीन थोड़ा खोलने चाहिए गवर्नमेंट को। अब हालात भी थोड़े अब ठीक भी होने लगे हैं। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अब ये थोड़ा बहुत यहाँ साइड सीन खोले ताकि टूरिस्ट भी आए, यहाँ अच्छा है, लोकल अभी आए। कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है और अच्छे से घुमाते हैं और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, तो कोई डर नहीं है। तो सब लोग आओ घूमने को और पहले जैसा कर दो घूमने का। कल से हम पहलगांव में हैं तो हम पहलगांव में घूमे, रात को ठहरे। यहाँ सब नॉर्मली है, कुछ भयभीत के कुछ डर जैसा है ही नहीं। हम इजीली सब पार्क में घूमे, नदी में घूमे, होटल में रहे, सब अच्छा है। यहाँ के जो हमारे ड्राइवर है, स्टाफ है, होटल के स्टाफ, दुकानदार और आम लोग है वो भी बहुत सही है, बहुत कोऑपरेटिव है। हमको कोई डर भयभीत कुछ नहीं रहा है और हमको जम्मूदे फ्राइडे दिन सिपाही गायगार सन्दीप बंदुरांग के ऑनर करिबले रीड लेंग सेरेमनी और गन सैल्यूट राखिसे। कुनके सिंगपोरा चाहत्रु एरिया दे टेररिस्ट खान लगदे गुली मारा मारी कुरा समय दे जीवन जाइसे। मेडिकल एफर्ट्स डीके नाबी सिपाही सन्दीप तो ताई लगा जखमप्रा मरी जाइसे। एरिया दो सील ऑफ करि दिसे और ऑपरेशन दो जाय आसे। क्रिस्टवार एमएलए शागुन पारिहारप्रा इंडियन आर्मी लगा रिस्पॉन्स के तारीफ करिसे और खुशे कि जम्मू एंड कश्मीर लगा मनुखान दो एम्प्लॉयमेंट बिसारी आसे टेररिज्म नहयकेना। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन दो फ्राइडे दिन न्यू दिल्ली दे जाइसे नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के अटेंड करिबले जुनटु मे 24 दे लबले आसे। मीटिंग दे ताइप्रा स्टेट निमिते फेयर फाइनेंशियल राइट्स खान मांग करिबले प्लान करि आसे। स्टालिन प्रा AIADMK लीडर एड्डा पाद्दी के क्रिटिसाइज करिसे किले ताई इदु डिमांड के खुशी नापाय कइना आरो तमिलनाडु लगा राइट निमिते फाइट करिबले ताई लगा कमिटमेंट रिएफर्म करिसे। जम्मू एंड कश्मीर कतरा दे ड्राई फ्रूट ट्रेडर्स खान हाथ मिलाई लैसे टर्किश प्रोडक्ट्स के नेशन वाइड बॉयकॉट करिबले। इदुतो होइले टर्की खान प्रा पाकिस्तान के सपोर्ट करिकिना ताइखान के ड्रोन सप्लाई करिसे जुनटुतो इंडिया खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर समय पाकिस्तान खान प्रा चलाइसे। ट्रेडर्स खान प्रा धोका प्रा निशाना लागि आसे कुसे आरो इटु बि कुसे कि इंडिया खान प्रा टर्की के मदद बि दिसे अर्थक्वेक समय आरो ताइखान प्रा इनागा एक्सपेक्ट करा नाइ कुसे। अलग अलग ट्रेड बॉडीज खान टर्किश प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट करिबले मातिसे आरो इंडियन यूनिवर्सिटीज JNU आरो जामिया मिला इस्लामिया के माथि मिलाइना टर्की लगदे एकेडमिक एग्रीमेंट्स खान कैंसिल करि दिसे। सारे अपने ड्राई फ्रूट जितने भी ये तो ताजर हैं, जो व्यापारी हैं, उसे आग्रह करते हैं कि ये सारा इनका ड्राई फ्रूट जो भी इनका सामान है टोटली बाइकआउट करें। जो हमारे यहाँ विजिटर आते हैं उनको पता है ये सामान कहाँ का है, वो हमारे से लेने वाले भी नहीं ले रहे और हमने भी पीछे से मंगवाना, हमारे जो होलसेलर्स हैं उन्होंने भी बाइकआउट कर लिया है। किसी समय में तुर्की में एक भूकंप आया था, सबसे पहले जो मदद की पहली खेप जो भेजी गई थी मोदी सरकार ने, वो उन्होंने भेजी थी एक मानवता को बचाने के लिए। लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि जब हमारी पाकिस्तान से जंग के बारे में फाइट हो रही थी तो सबसे पहले पाकिस्तान का समर्थन करने वाला ये तुर्की ही देश ऐसा था जिसने उसका समर्थन किया था, बाकी और किसी देश ने समर्थन नहीं किया।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि हम लोग जो यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, हम एकदम तुर्की के सामान को बाइकाट करते हैं। सारे अपने ड्राई फ्रूट जितने भी हो, ये तो ताजर हैं, जो व्यापारी हैं, उसे आग्रह करते हैं कि ये सारा इनका ड्राई फ्रूट जो भी इनका सामान है टोटली बाइकाट करें। जो हमारे यहाँ विजिटर आते हैं उनको पता है ये सामान कहाँ कहाँ का है, वो हमारे से लेने वाले भी नहीं ले रहे। Kerala de Kotarakara Kolam district de cinema de Makikan laga awas ke film screenings pra celebrate kuriwole Women's International Film Festival WIFF laga 6th edition do May 23 pra shuru hoise aro May 25 tak thakibo. Department of Culture bitore Kerala State Chalachitra Academy pra organize korise. Idu 3 din laga festival de alak genres aro desh laga maki filmmakers khan pra bana laga ase. Idu khan ge celebrate kuribo. Festival de 25 films feature hobo. Kotte 24 do films aro ekta do documentary ase. Idu khan feature hobo kushe. Screenings to Minerva Cinema, Kottarakara de Lobo, Kotte World Cinema, Indian Cinema aro Malayalam Cinema ke showcase kuribo. Screening sat WIFF pra forums aro cultural programs can be host kuribo. Dialogue aro artistic expression nimite. Registration fee do rupees 472 ase. General delegates karne aro rupees 236 ase students kan karne. Region laga bahar pra aha attendees ke support kuribo nimite. Buhibole laga jaga do Kerala Institute of Local Administration pra dibo kushe. Festival do ekta project laga hissa ase Kotarakara de cultural hub banawole Finance Minister KN Bala Gopal pra lead kurkina. India pra Islamabad khan cross border terrorism support ke khotam na kuriya tak Pakistan logode Indus water trade do ini suspend de rakhibo kushe. External Affairs Ministry spokesperson Randir Jaispal pra water and blood cannot flow together koina emphasize koise aro kiki laga dialogue thakile bi Pakistani do Kashmir re Indian territory occupy kurina thakade focus koribo lage koise edo chamla do hoile Pahalgam terror attack pichide aha laga ase. In the last briefing I had made very clear I had addressed this issue. Further to that, I have nothing to add, but at the same time, I would like to let you know that you are aware of our position, that any India-Pakistan engagement has to be bilateral. At the same time, I would like to remind you that talks and terror don't go together. On terrorism itself, as I had said earlier, we are open to discussing the handing over to India of noted terrorists whose list was given to Pakistan some years ago. I would also like to underline that any bilateral discussion on Jammu and Kashmir will only be on the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. And on the question of Indus Waters Treaty, I am again repeating myself, it will remain in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. As the Prime Minister has said, water and blood. International Monetary Fund pra Thursday de Pakistan karne bailout package defend kurise. Press conference de IMF pra claim kurise ki Pakistan laga external fund facility program do September 2024 de approved kurise. IMF pra idu part do standard process ase kushe. IMF laga communication department laga director Julie Kozak pra business today de kushe ki IMF pra financing do tinta important points de address kuri ase. Balance de payments challenges EFF disbursement do government budget de no hoy kuina. Pakistan Central Bank reserves de direct jabo aro program de Pakistan laga fiscal management improve kuribo karone structural reforms thakibo kushe. IMF executive board pra May 2025 te duita tranches release kurade US billion 2.1 disperse kurishe. The first is that IMF financing
is provided to members for the purpose of resolving balance of payments problems. In the case of Pakistan, and this is my second point, the EFF disbursements, all of the disbursements received under the EFF are allocated to the reserves of the central bank. So those disbursements are at the central bank, and under the program, those resources are not part of budget financing. They are not transferred to the government to support the budget. The program, and the third point is that the program provides additional safeguards through our conditionality. And these include, for example, targets on the accumulation of international reserves. It includes a zero target, meaning no lending from the central bank to the government. And the program also includes substantial structural conditionality around improving fiscal management. And these conditions are all kind of available if, in the program documents. If you wanted to do a deeper dive. And of course, any deviation from the established program conditions would, of course. Aviation Watchdog, Directorate General of Civil Aviation pra Friday de khushi ki Delhi pra Srinagar de jabolai laga Indigo flight to Wednesday de Pathankot osor de bishi bia turbulence aro hailstorm samna khrishe. Kriyokan pra idu bia mosam ke hatabo nimite Pakistani airspace te gushibole request kurishe. Hulibi Indian aro Lahore ATC pra bi deny kurishe kushe. Aircraft laga front prato bia hushe. Hulibi passenger kun bi jokum to hua nai kushe. Aro police khan pra itia idu laga ghatna opare chanbin jagase. US pra heartening koikina matishe ki takhan laga involvement pra India aro Pakistan majode dangor war ulabole thakado khotom hushe kushe. April 22 laga Pahalgam hamla de 26 June mori jaishe. State Department spokesperson Tammy Bruce pra ceasefire ke tarif kurigina positive kadam ase koikina chanaishe. Aro America laga role ke highlight kushe tensions ke rukhai dia pra. India khan pra Operation Sindur launch kushe Pakistan aro POK laga atangwadi infrastructures khilaf. Pakistan khan job tikina Indian military bases te May 8 to 10 de nishana lagaishe. Jundu pra Indian khan ke counter attack kuribole prompt kushe. Ceasefire agreement to May 10 de ahishe. 4 din lagadar larai kura bishe. US khan pra nijor ge idu ceasefire aha laga credits dia de Indian sources khan pra kushe ki ceasefire do third party laga involvement na thaki kina duida countries majode ahishe. And this is, and I understand your point, and what has been a generational concern about violence and terrorism in that region, certainly with the troubles between India and Pakistan, is that there is a ceasefire. Obviously, we know that we're very close to a full-scale war erupting, and what's very exciting and heartening is that America's involvement and assistance made a difference in that stopping, and a ceasefire that has continued. But of course, within that, one expects, as the world noticed again, that has not been resolved, that the potential of having these long-term problems resolved has returned, and it is an opportunity. Satta multi-party delegation ke Shiv Sena MP Shrikant Shinde aro JDU MP Sanjay Jhabra lead kuri kena UAE aro Japan ponjishet zedin. India laga global outreach against terrorism opor multi-party delegation pra nijor laga designated desh poncha pichede officials ke takhan laga mission ke brief kurishe aro Pakistan pra terrorism ke sponsor kura opor saf picture dishe. Sources hisab Indian delegation pra UAE parliamentary colleagues logode second meeting loishe. UAE officials logode meeting loa homoy takhan pra India laga diplomatic mission ke moded kuribo kushe. Itu logode dusra delegation pra Japanese officials logode khota kura homoy takhan pra bi Indian delegation ke Japan to India logode khara ase koina chanaishe. Ekta desperate kadam de support babole maksad te Bangladesh interim sarkar pra head kura Muhammad Yunus pra resign kuribole damki janaishe.
Idu fesla do Bangladesh Nationalist Party pra Thursday din andolan kurikina Army Chief General Waqar Uz Zaman ke kara warning dia piche ahi ase. Student leaders kando youth aro Islamist ke mathikina Dhaka de rally kuribole aro army containment tak berawole mathi ase Friday prayers khotom hua piche. Yunus laga resignation opor charcha ulado army chief kunbra election kuribole mangi ase tai khilaf andolon launch kuribole mamla ulai jaise. Jodi election do loise khule Yunus laga term khotom hobo de facto prime minister nishna. Bangladesh interim government pra chief professor Muhammad Yunus pra political party conflicts govern koribo napara karne resign koribo koina consider kori ase. Idu kobordo student backed national citizens pra laga leader Nit Islam pra Yunus logode lok pa de chanaise. Yunus koise ki political parties khan command ground na bai sarilebi effective govern koribo napare. Bangladesh interim government to joa sal pra challenges around military tensions kan samna kori ase. Gujarat Titans kan Lucknow Super Giants logode harigina IPL de top 2 finish de doubt de anidishe. Taikan itia IPL 2025 points table de lead kuri ase. Hulibi taikan laga akri match to jitikena top 2 spot de secure kuri bole lage. Judi idu match to taikan harile dusra teams jinaga RCB aro Punjab Kings kan taikan ke overtake kuribo pare. To viewers, breaking news de ido khobor khani thakibo.